Welcome students. Let's start with the topic pollination and its remaining part. We have completed the first part of the topic pollination and we will be completing the second part in this lecture. So just have a quick revision on the first part what we have discussed earlier. So as you know, the pollination is nothing but the transfer of pollen grains to the stigma of the pistil. It's called as the pollination, and the pollination, as we know, there are different ways of pollination. Two of them are self pollination and this one is the cross pollination. In the self pollination we have seen autogamy and geitonogamy, where autogamy represents the pollination which takes place in the same flower of the same plant. Geitonogamy is the pollination which takes place of different flowers but within the same plant, and xenogamy is purely a cross pollination which represents the pollination taking place in two flowers of two different plants. So we have significantly observed their differences through this diagrammatic representation, and I have shown you the process of self pollination, okay, in the form of autogamy and geitonogamy, as well as the process of cross pollination which takes place in between two plants. So after seeing these three different kinds of pollination in detail, as well as observing the chasmogamous flowers as well as the clistogamous flowers and their specialities, we need to move further to the part of pollinating agents, where we have to observe particularly abiotic and biotic agents which will be taking part constantly in a process of xenogamy, that is cross pollination. So please remember here that to do a self pollination we don't need any kind of pollinating agents, okay, though pollinating agents, they can also do take part in the process of self pollination, but they are not compulsory, as self pollination is easy to perform. So let's start with the pollinating agents, and you must know that there are two kinds. One is abiotic, another one is biotic, whereas all of these agents are there to achieve the process of pollination, whereas majority of plants use biotic agents for the process of pollination, and remaining very small proportion of the plants, they are actually dependent on abiotic agents. So we will start our discussion with the uh, abiotic agents first, and then we will cover the topic biotic agents. What are these abiotic agents? Abiotic agents are mainly, specifically, are of two types. First is shown over here, the pollination by wind, which is nothing but anemophilous pollination. As we have observed just before this chart, which shows you abiotic agents in that wind pollination, which is nothing but anemophily. So anemophily is nothing but the wind pollination, where this is one of the common among abiotic pollinators. So if you compare wind pollination with water pollination, then you will observe that the wind pollination is more common as compared to that of water pollination. So wind is more common and more greaterly used as compared to the water pollination, that is hydrophily. Here, as the wind pollination needs air currents to be passed on, the pollen grains are very much light in nature. Light in the sense they don't have a lot of weight. They are very light and non-sticky. They do not stick to any part, and that's why this nature allow them to be transported by the wind currents. पोलन ग्रेन्स हल्के होने की वजह से और नॉन स्टिकी होने की वजह से वो हवा में वाटर विंड करंट्स में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे प्लांट की तरफ, एंड दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ विंड पॉलिनेशन. इसका मतलब ये है कि जितने भी एनेमोफिली डिपेंडेंट प्लांट्स होंगे उन सभी प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स
they must be light and non-sticky so that they can be carried through the wind currents. Okay, even if you observe their stamens, they often possesses a well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents, and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. So it's very easy. If you observe these plants, such kinds of plant, then you will see a flower like here. See the example of corn. So this is a flower, and look at the picture of the stigma as well as the pollen grain shown over here. So wind pollinated flowers often have single ovule in each of the ovary and numerous flowers packed into an inflorescence, which is a familiar example of the corn cob. So wind pollination is quite common in case of grasses. Now the flowers petals are over here, and look at its style, stigma, ovaries, all of the processes are over here. And if you observe, this could be one of the inflorescence, floral inflorescence, which is shown over here. Look at this inflorescence. This inflorescence contain so many flowers. So I would rather say hundreds of flowers. So these all hundreds of flowers are over here in the inflorescence, which makes it lots of feathery stigma. And all these are exposed to the air so that they are ready to capture the pollen grains easily, and that is why they are there. तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको बहुत जगह पे मिलेगा, मतलब फ्लावर के बाहर, कंप्लीटली बाहर आया हुआ स्टिग्मा, कंप्लीटली बाहर आए हुए एंथर्स. इवन इफ यू ऑब्जर्व द चाइना रोज, in that also the flower is safe, or this is the flower, so this will be its anther. So the anther is too much away from the flower parts, which indicates that they can be easily carried through the water current, and that is a speciality of these wind pollinated plants. And the examples are very easy and in front of you. These plants are well known plants, and all of we eat these kinds of plants and their seeds, like wheat, rice, corn, barley, oat, rye, palm, etc. And lots of the examples are there which can be done by wind pollination. Eventually, if you consider any grass family, जो भी grass family से belong करते हैं, most of them do the pollination through wind, that is anemophily. So this is a speciality of anemophily. Even if this diagram is from your NCERT book, okay, but the new state board 12th biology book will observe that diagrams also, as you will see over here. So this is a particular diagram again showing a corn, okay, and in that you will see this one is for maize, okay. Before that we have seen this one is of corn and this is of maize, okay. So maize and corn both are the same, the names are different but they represents the same. Maize is a scientific name where we call it as Z maize, and corn is our common English name, okay. In Marathi we called it as maka, okay. So this is the corn. You will see here seed kernels of a corn. Now, okay, so look at the flowers of the corn. So these are the male inflorescence called as tassels. You will see their leaf called as the flag leaf, okay, and in between there will be a internode which is called as a tassel internode. So every node there will be one tassel, and the distance between two tassel is called as the internode. There will be silks called as the style. So these are all style, okay. And female inflorescence, this will be the female inflorescence. So it is but obvious that the fruits and the seed set should be done into the female inflorescence. यहाँ पे तो कॉर्न नहीं आएगा, रीज़न क्योंकि ये मेल पार्ट है, बट कॉर्न 100% यहाँ डेवलप होगा क्योंकि ये फीमेल पार्ट है. सो ऑल ऑफ द कॉर्न्स विल डेवलप हियर, एंड दीज आर ऑल orange color shown over here, these are all developed corn, okay. So you will see all kinds of root system, prop root, normal roots, stalk, leaf, seed kernels, and all of the types of these plants. But out of this, what is important here to note is the male inflorescence and the female inflorescence. And whatever, if you observe the male inflorescence,
look at the anthers, they are very much exposed like this. So these are all anthers and they are exposed. So if the winds flows from this to this, the anthers will travel like this very easily, as shown over here in one of the figures. So this is not from the corn, but this is a different plant. अभी ये फ्लावर को आप देखो और ये देखो इसके anthers, how they are dispersing in the air. So this is how air current comes and the anthers, they get released as they are very much light in nature and non-sticky. Okay, similarly one more example shown over here. Look at the example. This is how pollen coats on the feathery stigma and this is how pollen grains are traveled. तो ये सारे pollen grains है जो कि travel होंगे और ये feathery stigma है उस पर ये caught down होंगे और यहाँ pollination हो जाएगा. So wind pollination is like this way, which is shown over here in the diagrams. Before that we have seen the same diagram but with a different angle, and this one is a whole plant indicating all of the possibilities of the corn. Okay, so if you see further anemophilous flowers and their adaptation, so you will find a fascinating kind of situations in the flowers where जो भी plants एनोमोफिलस कंडीशन बिहेव करता है या फिर विंड पॉलिनेशन पे डिपेंड रहता है, उनके फ्लावर्स में अलग अलग प्रकार की एडेप्टेशंस होती है. एडेप्टेशंस मतलब वो अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट दिखाता है. सो अगर आप किसी भी प्लांट के नज़दीक जाओगे और उसका फ्लावर को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ एडेप्टेशंस से हमें ये क्लियर पता चल सकता है कि वेदर द प्लांट इज़ एनोमोफिलस और नॉट. तो एनोमोफिली जो भी प्लांट्स परफॉर्म करते हैं उनके फीचर्स क्या है. पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट जितने भी एनोमोफिलस प्लांट है उनके फ्लावर्स दे आर स्मॉल इन साइज, इनकॉन्स्पिक्यूअस इन नेचर, they are colorless, they don't have much more color, they don't have any nectar as well as the fragrance. कोई भी स्मेल नहीं है, उनका स्मेल ही नहीं आता है, फ्रेग्रेंस भी नहीं है, नेक्टर भी नहीं है, वहाँ पे हनी भी नहीं आएगी और कलर भी नहीं है उनको. मतलब सिंपल फ्लावर है, डोंट हैव द कलर, दे आर स्मॉल इन नेचर, इनकॉन्स्पिक्यूअस, विदाउट एनी नेक्टर एंड विदाउट एनी फ्रेग्रेंस. तो अगर आपको कोई फूल दिखता है, फ्लावर दिखता है और उसमें आपको क्लियर हो रहा है कि अरे भाई इसको नेक्टर भी नहीं है, फ्रेग्रेंस भी नहीं है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, स्मॉल भी है, तो शायद ये एनोमोफिलस फ्लावर हो सकता है. ओके, बट you need to again consider the next possibilities as well as adaptations to be much more clear about anemophily. Like point number 2, the pollen grains are light in weight, dry and produced in large numbers to increase the chances of pollination considering wastage of pollen grains. क्योंकि देखो अगर एयर करंट आता है, विंड की वजह से ये पोलन ग्रेन्स एयर में तैरते हुए दूसरे प्लांट की तरफ जाएंगे. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वेस्ट भी हो सकते हैं, वो आगे भी चले जाएंगे, बहुत ऊपर भी चले जाएंगे, नीचे भी दब जाएंगे, कुछ भी हो सकता है. सो इसीलिए अगर नंबर ज़्यादा रहेगा तो देयर विल बी अ चांस टू डू द पॉलिनेशन. जितना नंबर ज़्यादा उतना पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि 100 में से एक तो जाके फ्यूज़ करेगा, लाखों में से एक फ्यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी और 100 में से एक फ्यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. दैट्स वाई दे आर मोर इन नंबर. तो पोलन ग्रेन आपको लाइट मिलेंगे, ड्राई मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे और वो एयर में इजीली ट्रैवल हो जाएंगे. ओके, सो दीज 2 पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर. पॉइंट नंबर 3, आप उस फ्लावर की स्टिग्मा को ऑब्जर्व करो. स्टिग्मा इज फेदरी to trap the pollens carried by wind currents. What do you mean by feathery stigma? Say for, as if now what we observe that the stigma is like this. Okay, and this one is the ovary, this one is the style and this one is the stigma. अब ये स्टिग्मा में यहाँ पोलन ग्रेन पेस्ट होता है. ओके, सो ये तो हो गया नॉर्मल पोलन ग्रेन और नॉर्मल स्टिग्मा. बट फेदरी स्टिग्मा रिप्रेजेंट्स एंड इट शुड बी लाइक दिस. जैसे कि ये है स्टाइल, तो दिस विल बी लाइक द स्टिग्मा, तो ऐसे स्टिग्मा होगा. सो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग द पोलन ग्रेन्स इन सच काइंड ऑफ स्टिग्मा इज मच मोर ईजी एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू द स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स कैरिड बाय द विंड करंट्स. तो ऐसी स्टिग्मा अगर आपको मिलती है तो वो एनोमोफिली में
पॉसिबिलिटी है. The next point that the stamens are exerted with long filaments and versatile anthers. Okay, exerted with long filaments and versatile anther. इसका मतलब फ्लावर रहेगा यहाँ, दिस विल बी द फ्लावर, और उसका एंथर रहेगा यहाँ. सो लुक एट द डिस्टेंस, फ्लावर की पोजीशन और एंथर की पोजीशन. एंथर कितना बाहर आया हुआ है, दैट इज व्हाट अ स्पेशलिटी ऑफ द एनेमोफिलस फ्लावर्स. And of course, stamens and stigma are exposed to air currents. They are very much exposed to air currents, and this is a speciality. Okay, so you might notice many flowers having the features like this, कि उनके पोलन ग्रेन्स, उनकी एंथर्स और इनकी स्टाइल स्टिग्मा ये बहुत ऊपर आए हुए हैं, फ्लावर से बहुत ऊपर है, and they are easily exposed to the air and can be done with the anemophily condition. So these are the adaptation that needs to be considered to treat anemophilous flowers. Okay, so next, if you observe, which is the water pollination called as the hydrophily, this is rare as compared to that of wind pollination. इसीलिए ये rare है because it need water for pollination, and you know that angiospermic plants, they are terrestrial plants, very few are aquatic. So that's why it is quite rare in the flowering plants, and it is limited about 30 genera, and that to be mostly monocotyledonous plants. So, but where this water pollination is common, so water pollination is common in those plants which are lower group. It means very common among the lower plants groups such as algae, bryophytes and pteridophytes, and rare in case of the angiospermic plants, and that to be in monocots. So what are the examples of angiospermic plants which shows the water pollination? Examples are very simple. It is Vallisneria and Hydrilla, which grows in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. Okay, but you must know that not all aquatic plants use water for the process of pollination. So ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट पानी में ग्रो हो रहा है इसका मतलब वो वाटर पॉलिनेशन ही करेगा. इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी टास्क, बट aquatic plants, they do perform pollination through the water. So examples are in front of you. It is Vallisneria, Hydrilla and Zostera. So these are the examples. Now let's have a look that how pollination can be achieved through the water. If you see, to perform hydrophily, the flowers need some kind of modifications. फ्लावर्स में मॉडिफिकेशंस ज़रूरी है. जैसे हमने विंड पॉलिनेशन के लिए देखा कि फ्लावर्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं, वैसे ही वाटर पॉलिनेशन के लिए भी कुछ एडेप्टेशंस है. चलो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस. सेकेंड, पेरियांथ and other floral parts are unwettable. What do you mean by unwettable? It means they are waterproof, like they don't wet in the water because they have a suberin waxy layer on their surface, and which will not allow them to get wet through the water. Okay, and you know perianth is a tepal. Okay, it is a member of tepal. The third point is the pollen grains are long and unwettable due to presence of mucilage. So mucilage, I am talking about this part which is a wax, okay, particularly suberin wax, which covers the surface and don't allow the pollen grains to wet, or don't allow the floral parts to get wet. Okay, and the fourth point is that nectar and fragrance are lacking in the flowers. Means flowers, they will not have any nectar and they also don't have any fragrance. तो ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं रहेगी. So these are the 4 points by which we can compare the flower and studied adaptations of hydrophily. Okay, so but exceptions are always there. As in the before slide we observed that not all aquatic plants use water for pollination. Then what they use? So here are some exceptions, that some aquatic plants are anemophilous in nature. Example, Pontamagaton and Halogaris. Okay, these are 2 examples which are aquatic plants, but they are anemophilous in nature. Plants are aquatic,
but anemophilous, means they do the pollination through wind. And some aquatic plants are entomophilous also, example lotus, water hyacinth, water lily, etc. ओके, तो ये जो प्लांट्स है लोटस, वाटर हाइसिंथ, ओके, वाटर लिली, ये सारे जो हैं ये एंटामोफिली करते हैं. एंटामोफिली मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन. So these are some of the exceptions of aquatic plants. You must know that water hyacinth is a terror of Bengal. Okay, so it is also called as terror of Bengal. Now, if you observe hydrophily, it is particularly of two type. One is hypo and another one is EP. Hypohydrophily, EP hydrophily. And of course, as the name suggests, hypo means below the water and EP means on the surface of the water. मतलब water currents के ऊपर और below the water. So if you observe hypohydrophily, this is the pollination occurs below the surface of the water where pollen grains are heavier than water and that's why they sink down and caught by the stigma. पोलन ग्रेन का वेट ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होने की वजह से वो पानी में तैरते नहीं हैं और नीचे चले आते हैं, और नीचे चले गए कि फिर वो स्टिग्मा उससे पकड़ लेता है. एंड दिस इज हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. सिंपल. हाइपोहाइड्रोफिली ये आपको मिलेगा जोस्टेरा में, मरीन सी ग्रास जोस्टेरा, वेयर पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइंग एंड विदाउट एक्साइन. ओके, सो दिस इज इन जोस्टेरा. वेयर एज if you observe EP hydrophily, where pollination occurs on the surface of the water. Now these pollen grains are lighter or they have equal surface tension, equal specific gravity to that of water, and that's why they can travel on the water currents. Water currents पे वो float करते हैं और float करते करते तैरते तैरते वो स्टिग्मा की तरफ जाते हैं. So pollen grains are having specific gravity equal to the water, thus float on the water currents. Example, Vallisneria, where submerged dioecious freshwater plant Vallisneria, ये EP hydrophily दिखाता है. So these are basically two types of hydrophily that can be seen in the plants, hypo and EP. hypo में पानी के नीचे होने वाला है और EP में पानी के surface पे होने वाला है. But as whether it will be below or it will be on the surface, this must be considered as the hydrophily. Okay, so this is how water pollination takes place, and we have also observed their adaptations too. Now if you see hydrophily and if you observe their plants, so this is one plant shown over here. This whole color indicates the water. This is H2O. Okay, the plant is submerged totally. If you see, these are the male flowers which are producing the pollen grains. Okay, and these are the female flowers, 1 2 3, and one of the female flower is shown in zoom. As you will observe, this flower is shown over here. देखो अभी ये flower है, इस flower में you will observe the stigma is this, and you will see these pollen grains are, see, they are traveling around the stigma and ready to do the process of pollination. So it's very simple to observe such kind of pollination in case of plants. Okay, so if you see marine seagrass, okay, seagrasses where female flowers remain submerged in the water, the pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water, and some of them reach the stigma and achieve the pollination. Now this is what hypo that can be seen in case of seagrasses. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected. और ये मैंने आपको बताया था, and they are protected from wetting by mucilaginous covering. This mucilaginous covering they have, and due to that they are all protected. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce any nectar. मतलब pollination wind से हो या water से हो, फ्लावर में उनके फ्लावर में आपको नेक्टर भी नहीं मिलेगा और फ्रेग्रेंस भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट एनी एनिमल टू डू द पॉलिनेशन. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दीज प्लांट्स. ओके, सो आफ्टर दैट we must take a look towards the biotic agents. So biotic agents are nothing but the animals which do the process of pollination.
And you know, if you want animals to do the pollination, you need to attract, you need to be attracted. एखाद इंसेक्ट से फॉर हनी बी या फिर हमिंग बर्ड, उसे अगर आपको फ्लावर के नज़दीक लेके जाने का है तो फ्लावर ने वो एनिमल को अट्रैक्ट करना जरूरी है. अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स दे आर कलरफुल. Okay, they are pretty colorful, they have a good fragrance, they have a good smell, they have a good shape, and due to that most of the animals get attracted towards the flower and flower get reward of pollination. So there are some examples like bees, butterflies, beetles, wasps, ants, moths, birds like sunbirds and hummingbirds, even if bats, they are all common pollinating agents. In case of animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents in the world, whereas the large animals such as some of the primates like lemurs, arboreals. The arboreals means tree dwelling animals, the animals which lives on the trees, rodents, or even reptiles like garden lizard, okay, also act as a pollinators in some of the species. But common is the honeybee, and you must know one of the great phenomenon of honeybee is a pseudo copulation, which is shown over here in the diagram. अब ये डायग्राम हमारे NCERT के बुक में दी गई है इन द पार्ट पॉलिनेशन, बट देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्राम. डायग्राम मिलेगी पर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है. बट यू मस्ट नो व्हाट इज दिस एंड हाउ pollination is going to be achieved by the honeybee. Now look at the process carefully over here. ये जो फ्लावर आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज एन ऑर्किड फ्लावर. मतलब ये जो फ्लावर है दिस इज एन ऑर्किड फ्लावर. एग्जाम्पल इज ऑर्किड. सी, ऑर्किड का फ्लावर है एंड यू विल सी ऑल ऑफ इट्स पेटल आर कलरफुल. ये सारे अलग अलग कलर के पेटल्स है, बट वन ऑफ द पेटल शोन ओवर हियर इट रिजेंबल्स, ओके, इट रिजेंबल्स अ फीमेल हनी बी. तो ये जो पेटल है इसका कलर देखो और ये बाकी पेटल से इनके कलर्स देखो. यू विल सी द डिफरेंस इन द कलर. सिर्फ एक ही पेटल का कलर जो है वो फीमेल हनी बी के जैसा दिखता है. एंड दिस ड्रोन ट्राइज टू कॉपुलेट विद द हनी बी, फीमेल हनी बी. उसे लगता है कि यहाँ फीमेल हनी बी है एंड ही ट्राइज टू कॉपुलेट, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट ट्रांसफर्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस ऑर्किड फ्लावर टू अनदर फ्लावर. And this is how pollination is achieved. This whole process is called as pseudo copulation. It means it is not the proper copulation, it is pseudo, false copulation. Okay, honey bee false copulation में यहाँ ऑर्किड प्लांट के फ्लावर के पास आती है और पोलन ग्रेन्स लेके जाती है. सो इफ यू सी द एक्शन ऑफ मेल इंसेक्ट सच एज बी, wasp or fly that tries to mate with a flower whose parts resemble to those of female insect. Okay, तो ये वाला पार्ट जो है ये फीमेल इंसेक्ट से रिजेंबल करता है. ओके, एंड masses of pollen becomes attached to the male insect during this process and are transferred to the next flower visited by the insect, thus pollinating is. इस तरीके से पॉलिनेशन होता है. मतलब फ्लावर ने उसके खुद के अंदर ये एडेप्टेशन किया हुआ है कि उसका एक पेटल जो है वो फीमेल इंसेक्ट जैसा दिखता है, इसीलिए मेल इंसेक्ट वहाँ कोऑपुलेशन करने के लिए अट्रैक्ट होता है और उसका कोऑपुलेशन हो नहीं पाता है, बट वो मेल इंसेक्ट दूसरे फ्लावर की तरफ जाता है, तब वो वही उसके पोलन ग्रेन्स लेके जाता है. सो दैट इज़ हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट्स, एंड दिस इज one of the best example of pseudo copulation. Okay, orchid plant and honeybee. So insect pollination करने के लिए बहुत सारे adaptations flowers में है और वो हमें सब कुछ समझने. As you see, the flowers are large so that they can be easily visible. इंसेक्ट को क्विकली फ्लावर दिखना चाहिए, इसीलिए फ्लावर की साइज़ बड़ी होती है. कलरफुल, वो कलर की वजह से उस फ्लावर के नज़दीक जाने चाहिए, इसीलिए कलरफुल होते हैं. फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट मतलब उसका बहुत बढ़िया स्मेल आता है और उस स्मेल की वजह से भी ये इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नेक्टर. उनको उसमें से जो नेक्टर मिलने वाला है, इट मीन्स
फ्लावर का जो सैप होता है, न्यूट्रिशियस पार्ट प्रेजेंट इन द फ्लावर, जिसे हम नेक्टर कहते हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए ये इंसेक्ट्स वहाँ पे अट्रैक्टेड किए जाते हैं। इसीलिए ऑल ऑफ दीज आर द स्पेशलिटी। इसका मतलब फ्लावर आपको अच्छा लग गया, आपको लगा कि ये फ्लावर प्लक करना चाहिए, फ्लावर बहुत बढ़िया है, इसका स्मेल बहुत बढ़िया है, इसे हम कलेक्ट करके लेके आते हैं, इसका मतलब ये फ्लावर बना हुआ है इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, एंड दैट्स वेरी ट्रू। ओके, सो एनिमल्स आर attracted to the flowers by its color and its fragrance, and the flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract these animals। मतलब फ्लाइज से और बीटल्स से अगर पॉलिनेशन करना है तो ओडर जो है वो ओडर फाउल मिलेगा, फाउल ओडर फ्लावर का मिलेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर अदर एनिमल्स। ओके, सो द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। मतलब जैसे कि विंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स थे वो नॉन स्टिकी थे और वो लाइट वेट थे। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये स्टिकी है। अभी स्टिकी क्यों है? ताकि वो एक आध इंसेक्ट अगर वो फ्लावर पे बैठ गया तो उसके पैरों को, उनके एडहेसिव पैड्स को ये जो पोलन ग्रेन है ये पेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो स्टिकी है, वो चिपक जाते हैं। और फिर ये इंसेक्ट एक फ्लावर से होके दूसरे फ्लावर जाता है, दूसरे से तीसरे जाता है, ऐसे करते करते वो सब कुछ जो है वो पॉलिनेट करते जाता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ इट प्रोसेस टेक्स प्लेस। एंड व्हेन द एनिमल्स carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about the process of pollination. So this is how insect pollination is achieved. Okay, and there are so many species that goes for the insect pollination. This is very common in case of angiospermic plants. Now the next kind of type is pollination by birds, and birds, that is ornithophily. Ornitho represents the bird. Okay, so only a few type of birds are specialized in the process of pollination. They usually have small size and long beak. Okay, उनकी beak जो होती है वो long होती है, जैसे कि sunbird, hummingbird. And plants which do this process pollination, use sunbirds and hummingbirds for the process of pollination are bombax, okay, callistemon, that is bottle brush plant, and butea. Okay, here bombax is bombax mori, from where the silkworm that is achieved. मतलब ये silkworm जो होता है, ये silkworm is bombax mori प्लांट के लीव्स के ऊपर ग्रो होता है, उनकी पत्तियाँ खाता है और बॉडी के अंदर जो है सिल्क बनाता है। बाद में ये सिल्क जो है रियर किया जाता है और उससे फिर सिल्क की साड़ी बनती है, एंड लॉट्स ऑफ सिल्क प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सो दैट बॉम्बैक्स प्लांट व्हाट वी आर टॉकिंग ओवर हियर, इसका पॉलिनेशन करना है तो यू नीड अ हमिंग बर्ड और अ सनबर्ड। ओके, एंड ऑर्निथोफिलस फ्लावर के एडेप्टेशन है। देखो एनिमल है तो ऑफ कोर्स दे विल हैव ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर्स, लार्ज, एंड दे आर मच मोर शोवी। दे secrete profuse dilute nectars. Pollen grains are sticky and spiny. Flowers are generally without fragrance as birds have poor sense of smells. मतलब फ्लावर कलरफुल भी दिखेगा, ओके, नेक्टर भी बनाएगा, उसके पोलन ग्रेन्स स्टिकी भी होंगे, बट उस फ्लावर को फ्रेग्रेंस नहीं रहेगा, क्योंकि जो बर्ड्स है उनका सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी मच पुअर एज कंपेयर टू other animals. Okay, so that's why they don't have the fragrance. Pollination of bat is nothing but a chiropterophily, and this is the bat can transport pollen grains over long distances, sometimes several kilometers. बहुत दूर तक पोलन ग्रेन ट्रैवल करवाने हैं तो बैट्स का यूज़ किया जाता है। अडेप्टेशन और फ्लावर्स में अडेप्टेशन कुछ इस तरीके से है। पहला अडेप्टेशन, दैट द फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ स्ट्रांग फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग होगा, कलर डल होगा। दे सीक्रेट एबेंडेंट नेक्टर, बहुत सारा नेक्टर वो बनाएंगे, एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ईडिबल पोलन ग्रेन्स जो कि बैट खाएंगे। एग्जाम्पल एंथोसेफेलस, दैट इज कदम ट्री, ओके, देन एडेंसोनिया, दैट इज baobab tree, and Kaigelia, that is sausage tree. So these three trees are there on which lots of bats live, and these all bats, they will transfer their pollen grains to the next tree for the process of pollination. This is how chiropterophily is done, okay, which is called as the bat pollination.
So, after looking towards these two different kinds of pollinations, self-pollination and cross-pollination, there are certain advantages and disadvantages of this. And we have to observe these advantages and disadvantages. So, let's look at advantages of self-pollination. The first point is that in self-pollination, it maintains the parental character और प्यूरिटी ऑफ द रेस इंडेफिनाइटली. सो पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन बेस्ट है. सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइन्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी सेल्फ पॉलिनेशन सबसे बेस्ट है. द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. इसमें पोलन ग्रेन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कम पोलन ग्रेन्स में भी काम होता है. फ्लावर्स डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. फ्लावर्स को फ्रेग्रेंस की ज़रूरत नहीं है, कलर की ज़रूरत नहीं है. दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन एज दे आर सोलली डिपेंडेंट ऑन ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. Number 5, it ensures seed production. Rather, it is used as fail-safe device for cross-pollinated flowers. So, seeds और sure seeds चाहिए, confirm seeds production चाहिए, तो we need to go for the self-pollination, which is easy. Self-pollination eliminates some bad recessive traits. They also eliminate some of the bad recessive traits which comes in the population. But there are disadvantages. Disadvantages are like new useful characters are seldom introduced. Point number 2, vigor and vitality of the race decreases with prolonged self-pollination. Point number 3, immunity to disease decreases. And point number 4, variability and hence adaptability to changed environment are also reduced. तो ये जितने भी disadvantages self pollination के हमें यहाँ दिख रहे हैं, all of these disadvantages shown over here are nothing but the advantages of cross pollination. क्योंकि अगर एक हाथ प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करता है तो हमें उसमें नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हुए मिलेंगे. पॉइंट नंबर 2, उनका वीगर और वाइटलिटी बढ़ेगी, उनका रेस जो है वो बढ़ेगा, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन की कैपेसिटी जो है वो कम होगी और उसकी वजह से उनकी लाइफ बढ़ेगी, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एज वेल एज ऑफ कोर्स वो प्लांट्स ज़्यादा अडेप्ट होंगे to the change in the environment. So that's why cross pollination is much more important to continue the race and to do the evolution and adaptation in case of angiospermic plants as compared to that of the self pollination. और self pollination के जितने भी advantages है, those all are disadvantages of cross pollination. But as you know that evolution's demand says that much and much more complexities and variability should be there in the angiospermic plants, and that's why we have to depend on the cross pollination. Okay, so in the next part we will be talking about how these cross pollinations are good in respect to the self pollination and what kind of changes these plants have made in themselves to encourage the cross pollination and to discourage the self pollination. मतलब हमें नेक्स्ट पार्ट में ये समझना है कि क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए पौधों ने, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने किस किस प्रकार के चेंजेस खुद में किए हुए हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को कम कर सके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सके. एंड वी हैव टू ऑब्जर्व दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू एन्जॉयड इट. ओके, गुड बाय.